हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता। So say cd into content, and I'll say npm beat at latest and initialize it under the current folder. So it's not this means created under the content folder. Let's go to React and we got all the packages or all the files and folders we need. To install every single package, we need to run npm install. I'll say npm install. That will get the node modules that we want. We would need just in a second, and then we can just run npm run that. Alright, so this is the simple React application that we just got. Everything is working as expected. So for now, let's go ahead, kill this, and instead cd into the backend. So I'll open up a new terminal, cd into the backend, and if we just press B and press tab, it should be auto-completed. And to be able to initialize a Node.js application, we will say npm init-y, which will give us a package JSON file. Now we need a couple of different packages. So normally we would say npm install like Express, Mongoose, React.js, whatever we would like to have. Now instead of doing it in this way, I will install some specific versions so that even if you are watching this video a couple of months or even years later, it should still work. So I have prepared a GitHub gist that you can find the link in the description. Just go ahead, find the package JSON file, copy this, just copy everything, and we would like to paste this under the package JSON, like after the description, just put a comma, paste this in. Got all the dependencies. After the description, just put a
Description, just put a comma, paste this in. मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है सच है समय का ही सब दोष है धड़कन धड़कन एक गम रहता है वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जी ले जरा जी ले जरा Description, just put a comma, paste this in. We got all the let's just copy everything. And we would like to paste this under the package.json, like after the description, just put a comma, paste this. And under the package.json, like after the description, just put a comma. Paste this in. We got all the dependencies, and we have an extra comma. इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊं कहीं वापस किनारे पे आना मैं भूल न जाऊं कहीं देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा
मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी comma, let's paste this under the package.json. Then, like after the description, just put a comma, paste this in. We got all the dependencies, and we have an extra comma. Let's just delete that. नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। Alright. So we got a bunch of different packages with some specific versions. So that will make sure that even if you're watching this later at some point, we are gonna still have the exact same versions. And we have also a dev dependency, which is Node1. And with this in mind, let's go under the backend folder and just say npm install, which will basically see your dependencies list and install all the which will basically backend folder and just say npm install. Which will basically see your dependencies list and install all these packages with these specific versions. Looks like we got everything. It's completed. Now let's create a server.js file and get started with it. अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे
So I will say import express from express. आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहें, बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. What is the purpose of the cookie parser middleware in Node.js? Guess the correct answer from below options. Hello, what's up guys? Today in this video we will see cookies parser in our Express application. जी हाँ guys, आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट दिखाया कि व्हाट इज कुकीज़, है ना। जब भी आप लॉग इन करो तो गाइस आपका हम कुकीज़ स्टोर कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो वी हैव एप्लीकेशन, वी हैव अ कुकीज़ इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू थी। अब मैं अगर होम पे जाता हूँ तो यू आर नॉट लॉग्ड इन बता रहा है। ओके, उसके पीछे का क्या रीज़न है वो देख लेते हैं ज़रा। बट जो भी हो ये सब कुछ हमने कल की वीडियो में देख लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। तो ये इस तरीके से है। वी हैव दिस ऑथ कंट्रोल। एक सेकंड, सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है। लॉग इन पे चल के एक बार मैं लॉग्ड इन कर देता हूँ। सो या वी यू आर लॉग्ड इन। अगर मैं होम पे जाऊँ, रजिस्ट्रेशन पे जाऊँ, वापस होम पे आता हूँ तो यू आर लॉग्ड इन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम कुकीज़ को स्टोर कर रहे हैं एंड उसकी वैल्यू के बेस पे हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने लॉग इन किया या नहीं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कल का वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। कुकीज़ किसे कहते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट यस, एक चीज़ आप नोटिस करना कल के वीडियो में गाइस, हमें लेट्स से सबसे पहले तो गाइस अगर आपको कुकीज़ को क्या करना है, सेट करना है, बेसिकली ऐड करना है, तो कुछ आपको इस तरीके से करना पड़ा था। देन अगर आप देखोगे ये तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन जब मुझे कुकीज़ को गेट करना था, ओ माय गॉड, इतना लंबा कोड मुझे लिखना पड़ा जस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कुकी, राइट। सो गाइस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पैकेज मैनेजर, आई मीन एक न्यू पैकेज आ चुका है जो कि बहुत पहले से है, एंड दैट इज योर कुकी पार्सर। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो, सो दिस इज द कुकी पार्सर वाला पैकेज, ठीक है। हमें बस इसको इंस्टॉल करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज दिस कुकी पार्सर, है ना, फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं। सो बेसिकली कल के वीडियोस में हमने जब कुकीज़ को सेट एंड देन रीड करना चाहा था, उसको अब हम यूँ चुटकी में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुकी पार्सर मिडलवेयर। पर्पस क्या है इसका देख लीजिए। सो इट पार्सेस कुकीज़ फ्रॉम द कुकी हेडर एंड मेक्स देम अवेलेबल इन रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। मतलब अब आपको अगर
बेसिकली कुकीज को गेट करना है, देन वी कैन सिंपली यूज दिस पर्टिकुलर मेथड, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। नाउ इंस्टॉल किस तरीके से करना है देख सकते हो, यूज़ कैसे करना है आपको गाइस। जो भी हो, जब भी आप कोई भी मिडिलवेयर यूज़ करो, आपको आपका जो मेन इंडेक्स या app.js फाइल है वहाँ पे आपको इस तरीके से मिडिलवेयर को डिफाइन करना पड़ता है। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या देन अगर आपको डेटा को कुकी को अब एक्सेस करना है, तो मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट डॉट कुकीज तो है ही, कितनी इजीली आपको डेटा मिल जाएगा। नाउ अब अगर आपको कुकी को गाइस ऐड करना है, देन वी हैव रेस्पॉन्स डॉट कुकी एंड यहाँ पे की एंड देन यहाँ पे वैल्यू। मतलब इतना इजी हो गया अभी ये। सो आई होप गाइस पूरा कुकी पार्सर का आपको आइडिया पता चल गया होगा। इट जस्ट हमने जो कल के दिन मैनुअल इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की यारियां गिन के देख बदन पे नील दिए हैं इश्क ने बड़े जो हाथ पे छाले छील दिए इश्क ने वे मैं सारे दुख सेना तेनू नहीं दसना ओ लगियां इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की कभी उसे नूर नूर कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ इश्क में चूर चूर रहता हूँ दूर न जा नूर नूर कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ इश्क में चूर चूर रहता हूँ दूर न जा And as we use these packages, by the way, I'll explain every single one of them. So for now, just install it and follow along with me. So the first package that we used is Express, which is our web framework. This will allow us to build an API super easily, quickly, and it just has every feature that you can expect from. Now, to be able to use this import syntax, you need to visit package.json and put this type field to be equal to module. By default it is common.js, but we would like to go with module.
So if you don't put this module, it's going to give you some warnings. Alright, now let's create an Express app, just like this. We will say, let's listen on a port. I'll go with 5001. Let's say we're gonna get this function, and we can basically say console.log server is running on this port. Now मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफी, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जलते कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना, तेरे वास्ते मैं सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। Now let's save and try to run this file. To be able to run this, we would like to create a script called dev, and we will run the server.js file with the node-man package. Now let's open up our terminal, and we can even add a route. So I'll just go ahead and say app.get before we run this file. ऐसी राहों में मिलो ना, बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना, क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते Now let's open up our terminal. इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा
YouTube प्रीमियम में आपको एड फ्री YouTube और YouTube म्यूजिक एक साथ मिलता है। एक महीना फ्री में आजमाएं। And we can even add a route, so I'll just go ahead and say app.get. Before we run this file, if you visit localhost 5001, you'll click to run this function where we got request and response, and we can return something like res.send hello world. Nisha, keys. Okay, bye. Are you hungry? Come with me. जब तेरी उंगलियां मुझको छू जाती हैं तो कोई ख्वाब दिल में जगा जाती है कितनी बेरंग भी तो नहीं जिंदगी हर मुलाकात मुझसे ये कह जाती है तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा तेरी ही यादों में निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा हरदम सदा Now under the backend folder, just say npm run dev. And here we go, it says server is running on this port. Let's visit localhost 5001. We should be able to get this response that we just sent. Now since we are running this with NodeMon, right? We are running this with NodeMon. If you do some change like 5001, save, it should immediately restart. So this is the beauty of it. तुम अकेले नहीं रहते होगे अकेला ही रहता हूँ Now let's do some change like 5001, save, it should immediately restart. So this is the beauty of it. भले चुप तो रहना
तो रुकिए तो क्यों है खफा अरे कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना हूँ माना Now let's add all of our routes that we would need for the authentication. For now, I'll just keep it simple and put everything in this file, and then we're going to optimize it. Let's just say first we'll have this route, API auth sign up. In this case, we can return sign up route as the response. Now ये शाम का दिलकश मंजर ये साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए ये शाम का दिलकश मंजर ये साहिल और समंदर कहते हैं आप न I will जाए duplicate this twice. We're going to have it for login. कहती है बल खाती लहरें आप जरा कुछ देर तो ठहरे सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा And for the logout. कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना हूँ माना सुनिए दीवाने की Let's test this out pretty quickly. So if we visit /API auth login, this is what we got. इठलाती शोख हवाएं भीगी रंगीन फिजाएं जो आपको देखे जाए तो सीखे और अदाएं We visit sign up इठलाती and शोख हवाएं भीगी रंगीन फिजाएं जो आपको देखे जाए तो सीखे और अदाएं सुनिए तो ये जुल्फे जो देखे बादल सारे बरस बरसे वो पागल हे सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा हर कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना हूँ माना सुनिए दीवाने की हे सुनिए तो रुकिए तो logout, everything should be working as expected. Here we go. Now later in the video, we're going to change this code base. We're going to put the actual routes and controllers into their own folders and files, but this will be a little bit later in the video. So the other thing that I'd like to set up is my .env file. I'll go under the backend, create this .env file, and have my port coming from this file. So I'll put the exact same value. Click on the bell icon to get regular updates from Venus. But instead of putting it hard-coded, I will create a variable, say const port process.env.port. And to be able to use this, एक साथ मिलता है
we need, instead of putting it coming from this file. So ओ मेरा यार है रब वर्गा दिलदार है रब वर्गा मेरा यार है रब वर्गा दिलदार है रब वर्गा इश्क करूं या करूं इबादत इश्क करूं या करूं इबादत इको ही गल है अल्फ अल्लाह हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी इन्वायरमेंट वेरिएबल इन एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज कि ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, दे आर यूज टू स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज लाइक योर पोर्ट नंबर, आपका API कीज, आपका डेटाबेस का URLs और योर सीक्रेट्स आउटसाइड द कोड बेस। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपके लिए एक ऐसा फाइल है गाइस जहाँ पे आप अपनी जो सीक्रेट्स है, अपने जो प्राइवेट डेटा है, ठीक है, उसको आप वहाँ पे स्टोर करके रखते हो ताकि आउटसाइड कोई उसको एक्सेस ना कर सके। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपका पोर्ट नंबर, कि आप अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसको किस पोर्ट नंबर पे रन कर रहे हो, राइट। देन आपकी APIs की कीज, लाइक बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कोई API यूज़ कर रहे हो, लेट्स से वेदर एप्लीकेशन, एंड वहाँ पे आपको बताया गया कि लिमिट है, आपको एक दिन में खाली 100 रिक्वेस्ट आप वहाँ पे फैच कर सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपने API की को कर दोगे पब्लिक, तो गाइस बाकी लोग भी तो आपका API की यूज़ करेंगे एंड वो लोग खुद ही यूज़ करके आपका इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप यूज़ क्या करोगे फिर? उन्होंने पहले ही आपके API की एक्सेस करके ख़त्म कर दिया। दैट्स वाई हमें अपने जो प्राइवेट, जो एकदम सीक्रेट डेटा होता है, उनको हमें ऑलवेज एकदम ऐसे जगह पे स्टोर करके रखना ताकि कोई उसका एक्सेस ना कर सके। एंड वैसे डेटा को हम कहाँ स्टोर करते हैं? हम हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे स्टोर करते हैं। दिस इज इट नाउ। मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ऐड पोर्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल विच वी कैन यूज। फिलहाल अभी हमारे केस में तो आज हम पोर्ट को ही देखेंगे, जहाँ बेसिकली हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा होता है। put the exact same value, but instead of putting it hard-coded, I will create a variable, say const port process.env.port. And to be able to use this, we need to import the .env package. And this is something that we have installed. वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया Import the .env package. वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी उसे तकते हैं उम्र गुजारूं कोई और ख्याल जो आए झट से उतारूं ओ इश्क करूं या करूं इबादत इश्क करूं या करूं इबादत इको ही गल है अल्फ अल्लाह And this is something that we have installed. Here we can see, let's say import .env from .env, and we need to run this config method. मैंने इश्क इतर पहना मैं खुशबू खुशबू to be able to read this file content. वो ही महकता है मेरे भीतर हर सू मैंने इश्क इतर पहना मैं खुशबू खुशबू अब वो ही महकता है मेरे भीतर हर सू मेरे पैरों में भंगड़ा सांसों में टप्पे टप्पे मैं इश्क तराने गाऊं चप्पे चप्पे इश्क करूं या करूं इबादत इश्क करूं या करूं इबादत इको ही गल है अल्फ अल्लाह 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 अल्फ अल्लाह
¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Now instead of this hard-coded value, we'll be using the variable that we have just created, and let's make this to be a dynamic. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है Screen like server is running on this port, put the backticks, and we're gonna update this part with the port itself. Now if you saved, everything should be working as it was before, but now this value is coming from the .env file. And the other usage is, like for the .env, you can either use it like this, or you can say import .env and config, just like that. So this should still be working as it was before. Now let's do one more thing. If you take a look at the front-end folder, what they do is put the application code into a folder called source. So this is one of the best practices where you would like to put your application logic into the source folder. And this is exactly what I'd like to do for my backend part. So I'll go ahead, create this source folder, and put the server.js into it. इश्क की धूल रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए अखियां करे जी हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन
So this is our application code, right? Later in the video, we're gonna have something related to database, our routes, and everything will be going into this folder. But now if you take a look at your terminal, it should crash because we need to visit this path. So we would like to run the server.js file, but it is under the source folder. And let's update our main point. So if you don't update it, it should still work. Just kill this and run this. So it's going to work still, but we would like to just be a little bit more consistent and just say our main entry point is under the source and it is the server.js file. Okay, so with that everything should be working, and this is gonna be our very first section where we just set up our backend folder. So this is where we left. In the previous section we have built our authentication routes and we put everything into the server.js file. Now this is what I call the noob way of doing things, right? You would just put every route into the server.js file, and after some point this file will get really messy because every single function will take, let's say, 20 lines of code or maybe sometimes 70 lines of code. And if you think about it, this will be really hard to manage, and you will have a bunch of different routes, right? So just imagine, right? You'll have lots of different routes. So instead of doing it in this way, what we would like to do, let me just delete every single mess that I have just created. So this is the logout route that we have twice. Alright, here we go, and I'll just zoom out. So instead of creating everything here in this file, we would like to create some routes under the routes folder. So what I'll be doing is maybe just comment this out first, and I will say app.use, and there is one thing that I want to मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है, तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा? शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो highlight. So every one of these routes, so we have sign up, login, and logout, all of them are starting with /API/auth. So this is exactly what we'd like to say. ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं.
say /API/auth. In this case, we want you to put the auth routes, which is something that we will import. So let's delete this part. So instead of all that mess, now we have only one file that ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो। that we're gonna create right here. So I'll say auth.route.js. So this This is a convention that I'd like to use. You can just call it as auth.js. This is a normal JavaScript file. This is exactly the same thing, but just the name is different. So it is really convenient to see from this file explorer that this is a route file and it's an auth file, right? So we'll say import express from the express, then we'll just create a router. So I'll say express.router with the capitalized R, and then we'll say export default this router. And now we can put those प्यार विच दिता होया डैडी लगदा मैं तां मन गईयां तू ना रेडी लगदा प्यार विच दिता होया डैडी लगदा मैं तां मन गईयां तू ना रेडी लगदा जट्टी बोल के स्पीकरां च दस्सू मुंडिया तू मेरे होण वाले बच्चियां दा डैडी लगदा हुंदा दिल च वसाया ना जे सोहणिया routes. So I know this might look complicated, but just follow along with me. It should make sense. Just gonna गल्लों एवें ना सताया कर तू प्यार विच कदर भी पाया कर तू सैलदार एवें ना सताया कर तू प्यार विच कदर भी पाया कर तू तेरे वर्गे नू मेरे जही मिल गई रब दा भी शुक्र मनाया कर तू तैनू छट नहीं होना पावे तेरे तो भी सोना किसे लब a second. So we'll say router.get method to the sign up. We'll just return this response and we'll do the same thing for login and logout. This is
YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app all together. One subscription, 2 apps. Try 1 month free. जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में जीते जाऊं चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है बस इताब है चांद तारे Exactly what we had a couple of minutes ago. Now let's put them side by side. Here we'll just say import this route. We'll say import oath routes. That is going to be coming from routes oath route. यार तू भी सुन जरा आरज़ू मेरी है क्या मैं क्या बन जाना चाहता हूँ मैं कहाँ खराब हूँ मैं तो लाजवाब हूँ मैं ये मनवाना चाहता हूँ मान जा ऐ खुदा कितनी सी है दुआ मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा मेरे पीछे मेरे आगे .js, and make sure to put this .js extension at the end, otherwise it might not work because we're using type of module. You're gonna get some errors or warnings if you don't really add this part. Alright, now let's save this file and let's see what we have done. Now if we visit /API/oath/signup, we're gonna hit this part and we're gonna return this response. Same for the login. So basically everything that you have seen here will be prefixed with /API/oath. And now we can just double check by refreshing here. We got the logout, we got the login, say login, and sign up. Everything is working as it was before. But what we have done is basically make our code base look a lot more cleaner, right? Especially the server.js file. Now, here these functions will take around 50 lines of code or maybe a lot longer than that. We don't really want to put all this logic into here in this file. Instead, we'll like to create a folder called controllers, and this is
is another best practice that we should be doing, and we'll say our auth controller.js file. Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus. दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। Once again, this is the convention that I'm using. You can just call this as auth.js or anything.js, right? But specifically, I'll go with this convention. Now, we don't really want to put this sign up function here, but instead I will cut it. I'll say export, want to put this sign up function here. But instead I will cut it. I'll say तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। say export const, or maybe let's go with the function. It's the same thing. I was going to do an arrow function, but instead let's say sign up function. We're gonna take the request and response and basically just say res.send something like sign up route. Not request, let's go with that. And do the same thing for तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन।
log in and log out. I'll say log in and I'll say log out. तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app all together. Try 1 month free. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. है काश काश यूं होता हर शाम साथ तू होता चुपचाप दिल यूं रोता हर शाम साथ तू होता गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता Okay, now we're gonna delete that part. We'll say import the sign up from auth. सितारा तेरे बिना हूँ मैं आवारा जब भी तन्हाई ने सताया तुझको बेसाख्ता पुकारा चाहत है मेरी लापना पर मेरी जान दिल में हूँ रखता हाले दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है चाहता जान Okay, now we're gonna delete that part. We'll say import the sign up from auth controller. .js. Make sure to put the extension at the end. ख्वाबों का कब तक लूं सहारा अब तो तू आ भी जा खुदा
let's do the same thing for login method as well as the logout. And then we can basically save this file and it should be working exactly the same way. So I'm not going to test this out, but let's actually do it so that you're happy with it. We got the logout route as well as the login route. That's just giving us this सच है समय का ही सब दोष है धड़कन धड़कन एक गम रहता है वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जी ले जरा कहता है दिल the same exact response. Now we are going to call these functions actually async function because we'll be doing some promises stuff inside. Let's call them as async. For the logout, I think this doesn't really have to be an async. Let's save. Async. For the logout, I think this doesn't really have to be an async. Let's save. This is what we have for the authentication route. Later in the video, we're gonna have a couple of different routes, such as for the user routes where we can send friend requests, so on and so forth. But for now, let's have these routes for the authentication. And now they are not going to be get methods, instead they will be post methods. So we have just done get so that we can test this out in the browser. But now we don't really need it in production, right? In the real world applications, this should be equal to post method so that we can and send some data with the request. So this is exactly what I'll be doing, just 3 post methods for sign up, login, and logout. Now that's
gonna be it for this section as well, where we just optimize our code base a little bit. This is something that I specifically wanted to do, and do it in this specific section so that I can really highlight what is the best way of doing things to adding up your routes, and you know how you would do as a complete beginner. Alright, so that's gonna be it for this section. In the next one, we're going to connect to our database, which is gonna be MongoDB. Now for the database, we're gonna be using MongoDB. Let's go ahead and sign in. I think I'm already logged in, so it'll just take me to the dashboard. If you don't have an account, go ahead and create one. It's completely free, no credit card is required or whatsoever. Now we'd like to create a project. Here I have one, but I'll create another one. Let's say view all projects and create one from scratch. Let's call this as Streamify. Say next, create the project. देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। Project, and then we need to create a, say next, create the project, and then we need to create a cluster. Let's go ahead, say create, and I'd like to use the free plan. We don't really need to pay anything for this application, and let's say create the deployment. So it'll take you to this screen where we can copy our password. Let's say create the database user, and say choose a connection method. मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। Let's say, so it'll take you to this screen where बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। where we can copy our password. Let's say create the database user, and say choose a connection method. Now let's say we would like to connect from our Node.js application, so that's why we'll say drivers. Now this will give us a connection string.
Okay, so with the help of this connection string, we can basically connect to our database. First things first, I have copied my password that I'll paste here in the .env file. We'll be using it. And then I'll go right here, copy my string. Now I can see they have this show password option, and I want to just copy it while selecting this so that it can give me connection string with the password. So I'll say mongo underscore URI. This is going to be our connection string. So we have MongoDB server, my username, and the password that I have copied. So we don't really need it. We can delete that. So in your case, if you didn't get your password, let me actually display this. So if you get something like this, you would like to delete this part and put your password. Oops. So just delete this part and put the password that you have copied. Alright, then we have the entire connection string that we can use. Now what is going to be the database name? So if you don't put anything here, it'll be test by default. But I'd like to call this as stream by underscore db. Okay, so let's save and maybe delete these extra spaces. It's not really important, but let's go ahead and create a folder under the source called lib, and I will say वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले न होता था हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ बाहों में डाले बाहें बाहों का जैसे हार हुआ हमारा मैंने माना हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ db.js. Of course, it's not really important, but let's go ahead and create a folder under the source called lib, and I will say db.js. We are going to create a function, but first we'd like to import mongoose. Say mongoose from
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा आंखें मरहबा बातें मरहबा मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा ओ जालिमा Mongoose. Now this is a package that we'll be using and we have already installed it. So this will allow us to connect and communicate with our database as if we are writing some English code. Really, it's super easy to read and will be in action. Now I'll say export const connect db method. Let's say this will be an async. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app all together. Arrow function. I'll have some try catch blocks. In the try we'll say wait mongoose.connect. We'll click to connect to our MongoDB URI, right? And this should be URI, not URL. You can call this as URL, but you have to update this part. I'll just go with the URI as my name. Then we can say something like console log, and even before that we can assign this into a variable. This is not really needed, but I'd like to use this connection string. Let's say console.log MongoDB connected, and here is your host.
छोड़ दे अब यादों के दुख से ना ओ सुन भी ले जो दिल का है कहना जी ले जरा कहता है दिल जी ले जरा हम सफर हम नवा पास आ जी ले जरा इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊं कहीं वापस किनारे पे आना मैं भूल न जाऊं कहीं देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं For the catch, we can say process.exit of 1, which means something went wrong, right? Failure code is 1. Let's say 1 means failure, and I think my keyboard just died. Let me make that work. I'm typing, it is not working. Alright. So here we can actually specifically say connection, or let's say error connecting to MongoDB, just like this. So this is a super easy function. मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं मेरा तुम सहारा बनो एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं मैं किसी से कहूँगा नहीं that we need. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं मैं किसी से कहूँगा नहीं
Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the And we are going to run this as soon as we start listening our application. So here we'll say connect db, import the method from this libdb.js. सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा हूँ, File. Now let's open up our terminal. Here we can see whenever we save this file, first we are listening on this port and then MongoDB connected, and here is the host. Alright, now we can go into the MongoDB dashboard. We would like to do one more thing so that we don't really get any errors in development. Go ahead and visit the network access, and from here you would like to say add IP address, and access from anywhere will say confirm. This will take a couple आँखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ के शबनम की बूंदें बरस। 12 seconds and then we should be good to go. So after about 15 to 20 seconds it is active. Now we can visit our clusters बाहों में डाले बाहें बाहों का जैसे हार हुआ हमारा and say browse collections. We don't really have any data at the moment, होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ। but when we sign up later in the video, a user document will be created here and we can see everything, every data that we have in this dashboard. Now since we are setting things up, let's go ahead and set up our video calling platform, which is going to be Stream, and you can find the link in the description. So this is exactly what I'll be doing. And Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me.
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा आंखें मरहबा बातें मरहबा मैं सौ मर्तबा दीवाना हुआ मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का And if you don't already, you can create an account. Once again, धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा it is completely free to get. सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं तू भी कभी बोल दे लेके जान ही जाएगा मेरी कातिल हर तेरा बहाना हुआ तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म मेरे प्यार का फसाना हुआ तू शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा YouTube Premium is ad-free YouTube and exclusive access to all things VIP. Try 1 month free. कभी उसे नूर नूर कहता हूँ Get started with, we're going to create an application in this dashboard and then connect to it, just like what we have done right here. So if you don't know already, the Stream is the video calling platform, or I should say it is a platform that will provide us with all the tools to build an application that has video calling, chat messaging, and even feeds. And this can scale to millions or even billions of users. And some of the most popular companies, here we can see, are using Stream, such as Adobe, SoundCloud, Gumtree, so on and so forth. So this is seriously a perfect platform to get started with, especially if you are building an application for production, for production ready purposes. And we'll see how to use it. It's really easy to get started with. So we're going to create an application I already have in the past, but now let's create one more from scratch. You can give it any name. I have some stupid things here, but let's create one from scratch. I'll just say Streamify, and let's select some location and then say create the application. We can leave this as development. If this name doesn't work, you can change this, obviously.
Alright, now we got our API key as well as the API secret. Let's copy them one by one and try to use it in the .env file. So the first things first, I'll say stream API key, paste this in, duplicate it. This time this will be secret, and we can basically